हेलो फ्रेंड्स, तो हम एनसीईआरटी क्लास 7th का पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला थिंग, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो इस चैप्टर का नाम है एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive. We would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि सीक्वेंस वाइज आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस। तो यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी बार आपको बोला जा सकता है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, तो इसका ये पढ़ना ज़रूरी है कि सबसे जो ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन हीलियम, देन ओजोन, देन आर्गन एंड देन हाइड्रोजन। तो ये सीक्वेंस मैंने एक बार नोट किया रखा था, एक बार मैं मैच कर लूँगी कि यहाँ पर एक्चुअल में सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि नहीं। तो एक सेकेंड प्लीज़, आई एम पॉजिंग दिस वीडियो। तो नहीं, ये सीक्वेंस वाइज नहीं दिया गया है यहाँ पर। एक्चुअल सीक्वेंस जो होगा वो होगा नाइट्रोजन पहला होगा, देन होगा ऑक्सीजन, देन आपका आर्गन होगा, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद नियॉन, देन हीलियम, देन मीथेन, देन क्रिप्टन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, देन जेनॉन एंड देन ओजोन। तो ये जो है टोटल गैसेस है एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। पहले आप याद रखना 4 करके आप याद रखो। टोटल 12 गैसेस की नाम यहाँ पर कर रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, ओजोन। लास्ट 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन एंड ओजोन। सो पहला हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, ओजोन। तो ये 12 गैसेस है एटमॉस्फेयर में इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर क्वांटिटी। ठीक है, पहला हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, ओजोन। नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, ओजोन. Okay. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of air. Okay. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. Okay, nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. तो हम जब आप इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस लेते हैं, हम इनहेल नाइट्रोजन भी करते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ओके, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है बट वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. Okay. So do you know section बड़ा important है ना? Yes, हाँ. तो carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by tapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in.
However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. This rise in temperature causes the snow in coldest parts of the world or to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. यहाँ पर और एक डू यू नो दिया हुआ है. व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप. कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी, दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन. व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एयर area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. Okay. से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं है. हम कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं एक बार. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम टू बी equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fossil fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate. Then structure of the atmosphere, ये important है. Our atmosphere is divided into 5 layers, so starting from the earth surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो कितने लेयर्स है टोटल? हमारा 5 लेयर्स है. ठीक है, टोटल हमारा 5 लेयर्स है. एक तो हो गया ट्रोपोस्फियर, देन सेकंड हो गया स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और आइनोस्फियर. थर्मोस्फियर का और एक नाम होती है आइनोस्फियर, एंड लास्ट वन इज द एक्सोस्फियर. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जान लेंगे. ट्रोपोस्फियर दिस लेयर, हालांकि इसके बारे में और में डिटेल में हमको पढ़ना है. ये कुछ जियोग्राफी हमारा जो है ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है. ट्रोपोस्फियर दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर सॉरी, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. सो ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट क्या है? दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि ट्रोपोस्फियर का जो एवरेज हाइट है वो हो गया आपका 13 किलोमीटर. ठीक है, ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर. देन स्ट्रेटोस्फियर. अबव द troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर. This layer is almost free. तो stratosphere up to 50 किलोमीटर. ठीक है, troposphere up to 13 किलोमीटर. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. So aeroplanes कहाँ fly करती है ना? stratosphere में. ये बात हमको पता ही है. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Also, ozone gas is present in the stratosphere layer. Okay, so we have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. Now mesosphere. So this is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. So 13 up to 13 is troposphere, then up to 50 stratosphere, and then up to 80 that is mesosphere. Okay, then आता है meteorites burn up in this layer on entering from the space. तो meteorites burn up in मेसोस्फीयर लेयर. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर में सारे वेदर एक्टिविटीज़ होती है. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस रहता है जो हमको हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से. एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में मूव करता है या फ्लाई करती है. और जो मेसोस्फीयर है यहाँ पर हमारा जो मेटेओराइट्स बर्न हो जाती है. ठीक है, तो थर्मोस्फीयर क्या बोल रहा है कि इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. Ionosphere is a part of this layer. Okay, so ionosphere is a part of this layer, not another name. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometer. So thermosphere extends between 80 to 400 kilometer. This layer helps in radio transmission. तो radio transmission कौन सी लेयर के कारण होती है? थर्मोस्फीयर के कारण या आइनोस्फीयर के कारण. इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. Next, last one is the exosphere. So the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Right, hydrogen float into the space from here. So the space starts from after exosphere or from exosphere you can say. So हमने देखा क्या? troposphere up to 13, stratosphere up to 50, then troposphere, stratosphere, mesosphere up to 80, and then thermosphere up to 400. thermosphere up to 400 किलोमीटर, and then next 400 के बाद जो भी है exosphere है, and exosphere from that is outer space. Okay, अब आते हैं weather and climate.
वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो वेदर क्या है ना, क्लाइमेट क्या बोल रहे हैं कि ए प्लीजेंट ब्रिजी वेदर में मेक इन चेयरफुल प्लान। ओके, सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, ये तो आपको पता ही है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? ओके, बिकॉज वेदर चेंजेस frequently from minute to minute. That's why we get weather forecast. We don't get and climate forecast is also there. Not forecast, it's actually it's climate change. We call it climate change. Okay, so I hope you know the difference between weather and climate. You will be surprised to know that the Earth receives only one in two 200 crore 1 in 200 crore पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। ठीक है, 200 कोटि भागेर एक भाग, बंगाली में हम पढ़े थे। ठीक है, 200 कोटि भागेर एक भाग जो है सन रेज अर्थ में आता है। ओके, सो फाइन। देन temperature, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The degree of hotness and coldness is known as the टेम्परेचर। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर के थ्रू, बैरोमीटर के थ्रू प्रेशर मेजर करते हैं, रेन गेज के थ्रू रेनफॉल मेजर करते हैं, विंड वैन के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ विंड मेजर करते हैं, शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड वैन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ईयर। देन समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth, incoming solar radiation. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. Do you know the standard unit of measuring temperature is degree Celsius? It was invented by Andrew Celsius. तो ये का इम्पोर्टेंट है, एंड्रू सेल्सियस ने ये जो है इन्वेंट किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बाय द वे ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता होंगे। अब हम एयर प्रेशर के जाती है। Do you know on the moon there is no air and hence no air pressure? Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. Then air pressure की बात करेंगे हम। We will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we do not even feel that. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. So why we don't feel the pressure of air? Because our body has a counter pressure and that is equal to the pressure of the atmosphere. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. In areas having low temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. Okay, so in areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. Wind. Okay, do you know a wind is named after the direction from which it blows? Example, the wind blowing from the west, it is called westerly.
Then wind, the movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into three types, that is permanent winds, seasonal winds and local winds. So winds can be divided into three types: permanent, seasonal and local winds. Permanent winds. The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. Trade winds, westerlies and easterlies or polar easterlies, ठीक है, we call or that only the permanent winds. So permanent winds, we have three permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. That's why they are permanent winds. What are those? Trade winds, then आपका polar winds and westerlies. Seasonal winds, these winds change their direction in different seasons. For example, monsoon in India change their direction in different seasons. That's why we call seasonal wind. Local winds, these blow only during a particular period of the day or year in a small area. Those are local winds at a particular place and at a particular time. That is called local winds. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Lu. And cyclone, nature's fury. Odisha, located on the eastern seacoast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. On 17-18 October 1919, cyclone hit 5 districts of state. Another super cyclone occurred on the 29th October 1999 that devastated large portions of the state. The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge. The winds of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees and damaged the Kutch houses. Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 km inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25 October 1919 and gradually moved in a northward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Balikuda in Odisha on 29 October at 10:30 am. The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 13 million people are affected. A large number of livestock are killed. Standing crops of paddy, vegetables and fruits are heavily damaged due to salinization caused by tidal surge. Large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak and bamboo plantations have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. तो ये जो सुपर साइक्लोन है हम उड़ीसा में हुआ था, है ना, 1919 में. तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सुपर साइक्लोन कब हुआ था उड़ीसा में. अब आती है मॉइस्चर पे. देखो कि व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. Okay. So when the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of these
moisture for some time when there is no air movement to disturb it. साइड में हम लिख सकते हैं कि साइक्लोनिक रेनफॉल का इमेजेस दिया हुआ है, बहुत सुंदर से दिया हुआ है यहाँ पर, ओरोग्राफिक रेनफॉल और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक, टाइप्स ऑफ रेनफॉल का, तो ये पार्ट हम अच्छे से जो है पढ़ेंगे कि when the water vapor rises it starts cooling, the water vapor condenses causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Right? Then jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. So, on the basis of mechanism, that means how rainfall occurs. Then, rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. Right? Do you know other forms of precipitation are snow, sleet, hail? These are the other forms of precipitation: snow, sleet, hail. Okay, yeah, hail. Now answer the following questions. So tick the correct answer. What is atmosphere? Which two gases make the bulk of the atmosphere? Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? What is weather? Name three types of rainfall. What is the air pressure? ये सारे basics questions है. अब which of the following gases protects us from harmful sun rays? Definitely ozone. The most important layer of the atmosphere, that is most important layer of the atmosphere is, तो ये कौन सी होगा? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, सारे तो इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होगा आपका ट्रोपोस्फियर। एक बार इसको चेक कर लेंगे हम। तो ये देखो लिखा हुआ है दिस लेयर ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ट्रोपोस्फियर, क्योंकि यहीं पर ही हम हैं और वेदर एक्टिविटीज होती है, तो डेफिनेटली दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure decreases. When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called rain. अब मैच द फॉलोइंग इजीली कर लोगे हम। चलो, तो हमारा जो 4th चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है और इस वीडियो में सिर्फ इसी चैप्टर को हम कवर करेंगे। बाकी और भी 3 चैप्टर रह गया, 5, 6 और 7, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख